बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to deinstall Oracle Database 18C Express Edition Pluggable from Windows 10 InshaAllah। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle Database 18C Express Edition को deinstall किया जाता है Windows 10 में से। So first come to search area। सबसे पहले हम सर्च एरिया में आएंगे। राइट CONT लिखेंगे। CONT ओपन कंट्रोल पैनल। राइट कंट्रोल पैनल और राइट CONT ओपन कंट्रोल पैनल। CONT लिखेंगे और कंट्रोल पैनल को from this right top select category from view by drop down। कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे व्यू बाय ड्रॉप डाउन में से। Now hit uninstall a program under program heading। अनइंस्टॉल एक प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम की हेडिंग में से। Now select Oracle Database। Oracle Database 18C Express Edition को सेलेक्ट करेंगे। हिट अनइंस्टॉल बटन और अनइंस्टॉल का बटन दबाएंगे। Its installation is same we remove other Windows program। इसकी डिंस्टॉलेशन कुछ इसी तरीके से है जो हम अपने आम प्रोग्राम्स को विंडोज के रिमूव करते हैं, अपने हटाते हैं अपने सिस्टम से। SQL Plus is open to show you that I have already installed 18C Express Edition। ये इसलिए खोला था कि आपको दिखा दूं कि मैंने इंस्टॉल किया है। So now uninstall it। Hit yes button। Hit OK button।
Now it will take time, so I have to pause it. Now come to the Oracle Database 18C installation folder where I install 18C Express Edition DB folder. Now we need this database folder as well. HIJ come to database installation folder and delete current DB folder. Go. So now the database 18C installation Express Edition installation is complete. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.